So in this video we will talk about the electric field due to rod, right? So we'll be talking about the electric field due to rod on the axis of rod, on the equator of rod, and maybe on any general point of the rod. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रॉड, इससे पहले हमने बात की थी पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, उसके सेंटर पर, उसके एक्सिस पर, और एक और बात की थी हमने आर्क के सेंटर पर। तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट है हमारी। इन दिस केस वी विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड। केस फर्स्ट, at axis of rod. Let's say we have a rod having charge q, length l, r दूरी पर एक पॉइंट है p। इस तरीके से we have to find electric field at point p। तो हम जानते हैं कि Coulomb's law is valid only for point charges, but this rod is not a point charge. So in order to create a point charge with this rod, what we'll do is we'll take an element at distance x of thickness dx. This element of thickness dx will have a charge dq, जो कि हमें मिल सकता है q by l into dx। Now electric field at point P due to this small charge is dEP, and that will be k dq upon दूरी, which is x का स्क्वायर और इंटीग्रेशन। To cover whole rod, we should start the value of x from this r up to this point, which is r plus l. This is l. This length is l। तो r से स्टार्ट करके r plus l तक जाना होगा। k q by l dx upon x square integration r to r plus l। So k q by l integration of x to the power minus 2 is x to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1, limit is same, r to r plus l। So it is k q by l minus 1 by x, this minus is in multiplication, r to r plus l। So what we get is minus kq by l 1 by r plus l minus 1 by r। Further adjusting this minus sign, we will get 1 by r minus 1 by r plus l। So this is the final result for electric field at point P. In case 2, we want to calculate electric field at some equatorial point, let's say. I'll derive a general formula at the end with which we can easily calculate the electric field at this equatorial point due to the rod in a very easy way. So let's say the point P is at distance r. This is point P at distance r from the rod. The length of rod is again same, q charge, and length is l. So here we are talking about equatorial point. Electric field at equatorial point. तो इस इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए we'll again do the same thing। इस रॉड में at distance x here and at distance x here, what we'll do is we will consider small elemental charges
dx dx. This length is dx, this length is also dx. This is having dq charge, this is having dq charge again. So this, due to this dq charge, electric field at point P will be something like this, something like this. And due to this dq charge, electric field will be something like this. Suppose this angle is theta, this will also be theta, this is theta, this is theta, this is very small electric field dE, this is again very small electric field dE. So what do I need to do is, I need to take components of these dE. So dE cos theta is in this direction, and dE sin theta are in these directions. So this d sin theta will get cancelled by this, and both d sin thetas d cos theta will get added up. So we can easily see that the net electric field in this case due to this rod will only be in upward direction, that is in y direction, and that will be given by integration of d cos thetas. dE can easily be calculated by k dq by duri. This is r, this is x, so this distance will be r square plus x square under root. So r square plus x square under root cos square k dq by duri square dot cos theta. In this triangle, the cos theta will be base, which is r, upon hypotenuse, which is r square plus x square root, and the limit will go from minus L by 2 to plus L by 2. This is minus L by 2, and for this point to be covered, the limit is plus L by 2. So if I solve above integration, I should put the value of dq, which is q by L dx, r भी constant है, r square plus x square की power 3 by 2 integration. Now to integrate this thing, I need to use substitution method, trigonometric substitution method. So let's take x to be equal to r tan theta. Then what I'll get is dx is equal to r sec square theta d theta. If I put the value of dx in above equation, then what I'll get is k q r by L. Dx is simply r sec square theta d theta upon, if I put x to be r tan theta in this equation, then what I'll get is r square plus r square tan square theta की power 3 by 2. If I further solve it, I'll get kq r square by L sec square theta d theta upon r square common will come out to be common from this bracket, so r cube will get reflected here, and 1 plus tan square theta is sec square theta to the power 3 by 2, that is sec cube थीटा. सेक स्क्वायर थीटा सेक क्यूब थीटा ये कैंसिल होंगे आपस में, या आर स्क्वायर से आर क्यूब कट करता हूँ, के क्यूब बाय एल आर आया, और यहाँ आया आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा, तो एक सेक थीटा नीचे बचा जो ऊपर जाकर के हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन के क्यूब बाय एल आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास में साइन थीटा. लिमिट लग रही होंगी कुछ, लिमिट अभी मैंने लगाई नहीं है, तो अब मैं लिमिट लगाने की कोशिश करता हूँ. एक काम करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर पता है x बराबर r tan थीटा है, तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ. tan theta is equal to x by r, x is perpendicular, r is base, so this will be x square plus r square का रूट,
यहाँ से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ. दिस इज थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा विल कम आउट टू बी इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा विल बी x अपॉन दिस. तो x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट. Now I can put limit on this value of x, which is from minus L by 2 to plus L by 2. So k cube by LR L by 2 upon L square by 4 plus R square under root minus of minus L by 2 upon again same L square by 4 plus R square under root. L by 2 terms will get added up. I'll get k cube by LR and L upon L square by 4 plus R square under root. So if I cancel this L by L, then I'll get is k cube by R. I can even take 4 as an LCM and make it in numerator. So what I'll get is L square plus 4R square plus, so this will be my answer. So this result has to be remembered. It is better if you remember this result. Okay, so one more thing I would like to tell you is that is the case 3. Case 3 is quite interesting. Case 3, what I'll do here is I'll just find electric field due to finite rod at any general point. So let's say if I have a rod like this, is a finite rod, and at some distance r there is a point P, and if I am able to calculate this angle to be theta 1 and let's say this angle to be theta 2, if this rod is having charge q, length L, then it is better always to write charge in terms of charge per unit length, right? If I say that this rod has q charge and length L, then I can say charge per unit length is q by L. If I treat this q by L to be equal to lambda, then this lambda is called linear charge density. This lambda is called linear charge density, right? Unit of this lambda will be obviously coulomb due to q per meter due to L, right? So if I have to calculate electric field at this point P due to this rod having some, let's say, q charge, length L, and q by L can be treated to be equal to lambda as I told here. So this point P may have electric field with two components. This electric field I'm calling as E perpendicular. इसको E perpendicular मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये perpendicular to the length of rod है, right? So E perpendicular is the electric field perpendicular to length of rod. तो हमारे पास दो कंपोनेंट होने वाले हैं, एक होगा perpendicular to the rod और दूसरा हो सकता है parallel to the rod. तो E perpendicular to the rod will always be equal to K q by LR sin theta 1 plus sin theta 2. If you are interested in derivation of this particular electric field, then I can show it to you in a very easy manner
If you remember the derivation that we did in case 2, that was equatorial point for a rod, right? हमने इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ रॉड में इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी कैलकुलेट किया है. हम यहाँ पहुंचे थे, आपको ध्यान है. तो जब हम यहाँ पहुंचे थे तो देखिए वहां पर भी रिजल्ट सेम आ रहा है, के क्यू बाय एल आर साइन थीटा आ रहा है. इसी साइन थीटा में हमने लिमिट लगाई है. जस्ट इसी साइन थीटा में हमने लिमिट लगाई है. यहाँ पर देखिएगा आप, के क्यू बाय एल आर साइन थीटा आया है. और इस फिगर में देखिएगा एक बार आप, जस्ट फिगर में भी देखिए, यहाँ पर भी आप देखेंगे यदि, तो ये जो रॉड है इसी रॉड का हम रिजल्ट डिराइव कर रहे हैं. ये पी पॉइंट था, इसी में मैं लिमिट माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू ले रहा हूँ. तो वो माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू लिमिट एक्स की है. यदि मैं थीटा के रूप में यहाँ लिमिट लगाता, इस एक्सप्रेशन में यदि मैं थीटा के रूप में लिमिट लगाता, तो मैं लगाता थीटा 1 से थीटा 2 की लिमिट लगाता मैं इनफैक्ट. और जैसे मान लीजिए एक एंगल मैं नाप रहा हूँ, ये है थीटा 1, एक इधर है थीटा 2. एक एंगल क्लॉकवाइज है, एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज है. तो मेरी जो लिमिट होगी इस केस में, वो अपर लिमिट थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस थीटा 1 होगी. तो यहाँ पर देखिएगा रिजल्ट क्या आ जाएगा, के क्यू बाय एल आर साइन थीटा 2 माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा 1. माइनस थीटा 1 को मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, तो ये प्लस बन जाएगा. देखिएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपके पास में के क्यू बाय एल आर एंड साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, इस तरीके से. तो बस यही करने वाला हूँ मैं, और इनफैक्ट यही किया भी है मैंने. देखिएगा के क्यू बाय एल आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्पोनेंट आएगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड. एक और कॉम्पोनेंट अवेलेबल हो सकता है यहाँ पर, विच कुड बी इन दिस डायरेक्शन और विच कुड बी इन upward direction. This component is called E parallel to rod. ये जो रॉड के पैरेलल वाला कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू भी बिल्कुल इसी तरीके से ऑब्टेन की जा सकती है, के क्यू बाय एल आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. मैं यहाँ पर मॉड लगा दे रहा हूँ, जिससे जो डायरेक्शन होगी, ये इलेक्ट्रिक, ये माइनस सीधी यहाँ पर आएगा भी, आप उल्टा भी कर देते हैं, मान लीजिए आप रिवर्स कर देते हैं, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 कर देते हैं, तो बस एक माइनस साइन आपको नजर आएगा. तो उस माइनस के लिए, माइनस विल बी टेलिंग यू जस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है. तो उसके लिए मैं आपको अभी गाइड करने वाला हूँ कि डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे. विल ओनली बी फाइंडिंग द वैल्यूज, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड which is parallel to the rod is given by this, and the perpendicular component of the electric field will be given by this. One important point, you need not put this theta 1 or theta 2, this theta 1 or theta 2 with sign. I have included the signs, so you have to simply find the value. Let's say theta 1 is 30 degree, theta 2 is let's say 60 degree. You don't have to take it कि भाई ये वाला पॉजिटिव होगा या ये वाला पॉजिटिव होगा. You have to simply use 30 degree and this one as 60 degree. That's it. You don't need to include any sign in it. Signs has been included in deriving this formula already, right? So finally you will get two components of electric field. This is perpendicular to the rod, this is parallel to the rod. How will you find the direction of the electric field, whether this component will be in upward direction or downward direction, or this E perpendicular will be in the right direction or it is in the left direction? So simply, let's say if I have rod, this rod is having some positive charge and I have to find electric field at this point, then obviously I can simply say that the whole charge of this rod, if I centralize this whole charge of the rod at the center of the rod, then I can see that the direction of the force or the direction of the electric field or direction of force on this +1 coulomb charge is in this direction. So the force in this direction can only be obtained if one component is in this direction and the other component is in this direction. Similarly, if I have a rod having negative charge and the point P of observation is here, right?
then the direction of electric field can easily be found. Let's say I centralize this whole negative charge at the center of the rod, then I can see that this at this point P, if I keep a +1 coulomb charge, then this +1 will get attracted in this direction. So the electric field will be in this direction, that is the force on +1 is in this direction, so the electric field will also be in this direction. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड तभी मिल पाएगा जब एक कंपोनेंट ऐसा हो और दूसरा कंपोनेंट ऐसा हो. तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एट एनी पॉइंट. ओके.